मदद करने वाला। नासिर का मतलब होता है मदद करने वाला। ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि ये अलिफ नहीं है तो भी मदद की मीनिंग मौजूद है, अलिफ के आने के बाद भी मदद की मीनिंग मौजूद है। दोनों सूरतों में मदद, हेल्पिंग जो है वो दोनों में मौजूद है, नसर में भी है नासिर में भी है। अलबत्ता नासिर के अंदर एक इजाफी मीनिंग आ गई, करने वाला, मदद करने वाला। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ के आने से एक एक्स्ट्रा मीनिंग आई है, इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन जो रूट मीनिंग थी वो भी इसके अंदर मौजूद है समहाउ, और वो क्या थी? हेल्प आउट करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक और इसी के साथ आप मिला लें, मंसूर। मंसूर, मंसूर की मीनिंग मालूम मालूम है किसी को? जिसकी मदद की जाए। जिसकी मदद की जाए, मदद, जिसकी मदद की जाए उसको मंसूर कहते हैं। अब आप देखिए, मजीद इजाफा हो गया, मीनिंग के अंदर जो है वो इजाफा हो गया। क्यों इजाफा हो गया? क्योंकि शुरू में एक मीम बढ़ गया, दरमियान में एक वाव बढ़ गया। ठीक है। लेकिन वो जो नून स्वाद रा है ना, मदद के मीनिंग वाला, वो अभी भी इसमें मौजूद है। ठीक है। तो नून स्वाद रा जो है वो हरूफ असलियां हैं, और ये जो मीम है या वाव है या अलिफ है ये हरूफ ज़ायदा है। ये बात पहले भी आ चुकी है, यहाँ तक तो बात पहले आ चुकी है। अब ये समझिए कि अरबी में अगर कोई वर्ड हमारे सामने आएगा तो उसमें या तो तीन हरूफ असलियां होंगे, या उसके अंदर चार हरूफ असलियां होंगे, या उसमें पांच हरूफ असलियां होंगे। इसके अलावा नहीं होगा। हरूफ ज़ायदा इसके अलावा हो सकते हैं। अगर ऐसा वर्ड है जिसके हरूफ असलिया तीन है तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? सुबह से। सुलासी कहलाएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके हरूफ असलिया चार हैं तो वो रुबाई कहलाएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके हरूफ असलिया पांच हैं तो वो खुमासी कहलाएगा। सुलासी, रुबाई, खुमासी। सुलासी का मतलब वो जिसमें तीन हरूफ असलियां हों, रुबाई का मतलब वो जिसमें चार हरूफ असलियां हों, खुमासी का मतलब वो जिसमें पांच हरूफ असलियां हों। अच्छा, अब आपसे अगर पूछा जाए कि मंसूरुन, ये सुलासी है, रुबाई है या खुमासी है? सुबह से। ये सुलासी है। ठीक है, ये सुलासी है। जज़ाकल्लाह खैर। क्यों सुलासी है? हालांकि इसमें तो पांच लेटर्स हैं, मीम, नून, सॉद, वाव, रा, पांच लेटर्स हैं। लेकिन ये क्या कहलाएगा? खुमासी नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? सुलासी कहलाएगा। क्यों सुलासी कहलाएगा? क्योंकि इसमें रूफ असलियत थी। हरूफ असलिया तीन है, बाकी भले जितने भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरूफ असलिया चूंकि तीन है, इस वजह से ये सुलासी कहलाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है इस्तिगफार। भाई इस्तिगफार करो। इस्तिगफार जो है ये आपके ख्याल में सुलासी है, रुबाई है, खुमासी है? जी। चलो। बात फिर से दोहरा देंगे उसका। इस्तिगफार, इस्तिगफार जो है ये सुलासी है, रुबाई है, खुमासी है? ये भी सुलासी है। अच्छा चले, मुश्किल हो रही है आप रात को। ये भी सुलासी है। क्यों सुलासी है? इस वजह से सुलासी है कि इसके हरूफ असलियां हैं गईन, फा और रा।
गैन, फा और रा जब भी आएगा तो इसके मीनिंग में माफ करना शामिल होगा। माफी जो है वो इसकी मीनिंग में शामिल होगी। ये हरूफ असलिया जब भी इस तरतीब से आएंगे कि पहले गैन आ रहा हो, फिर फा आ रहा हो, फिर रा आ रहा हो, तो उसकी मीनिंग में माफी शामिल होगी। अब इस्तिगफार का मतलब है माफी मांगना। इजाफी माना आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इजाफी लेटर्स भी तो आ रहे हैं। हमजा आ रहा है शुरू में, फिर सीन आ रहा है, फिर ता आ रहा है, फिर बीच में अलिफ आ रहा है। ये उसके एक्स्ट्रा लेटर्स हैं। एक्स्ट्रा लेटर्स की वजह से एक्स्ट्रा मीनिंग भी आ रही है। लेकिन वो जो रूट मीनिंग है वो इसमें मौजूद है। मिसाल क्लियर है? अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है गफ्फार। हमारे यहाँ बाज लोगों का नाम होता है अब्दुल गफ्फार, सुना होगा आपने। है ना एक वर्ड गफ्फार। ये इसी से बना है, गैन फा रा। गफ्फार का मतलब क्या होता है? माफ करने वाला। माफ करने वाला। गफ्फार का मतलब है माफ करने वाला। अब देखें आप यहाँ पर भी जो है, वो चूंकि रूट लेटर गैन फा रा है, तो माफी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इजाफी मीनिंग क्या पैदा हो रही है? माफ करने वाला। क्यों इजाफी मीनिंग पैदा हो रही है? क्योंकि फा डबल हो गया, रिपीट हो गया। अलिफ जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। तो दो लेटर्स एक्स्ट्रा आए, उसकी मीनिंग भी एक्स्ट्रा हो गई। वाज़ेह हो रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है, आगे ये बार बार ये वर्ड आते रहेंगे कि सुलासी है या रुबाई है या खुमासी है। तो अरबी का कोई कलिमा, कलिमे से मुराद वर्ड है। कोई भी वर्ड जो है वो या तो तीन उसके अंदर हरूफ असलिया होंगे, अगर तीन हरूफ असलिया होंगे तो वो सुलासी है। या उसमें चार हरूफ असलिया होंगे तो वो रुबाई है। या उसमें पांच हरूफ असलिया होंगे तो वो खुमासी है। फिर इसके बाद दो और इस्तिलाहात हैं, सरफ़े कबीर और सरफ़े सगीर। किसी मुश्तक इस्म या फ़ेल की वो गिरदान जिसमें तमाम सीगों को जिक्र किया जाए। सीगा पहले आ चुका है, सीगा कहते हैं वर्ड की फॉर्म को। एक फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म, सारी फॉर्म्स अगर जिक्र की जाए एक साथ एक तरतीब से, तो उसको सरफ़े कबीर कहते हैं। जैसे ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना। तो ज़रबा से लेकर आखिर तक सारे फॉर्म्स जो हैं वो पास्ट की सारी फॉर्म्स जो हैं वो उसमें जिक्र कर दी। तो ये जो है वो क्या कहलाएगी? सरफ़े कबीर कहलाएगी। और सरफ़े सगीर का मतलब ये होता है कि किसी बाप की वो गिरदान जिसमें उस बाप से इस्तेमाल होने वाले अक्सर सरफ़े कबीरों का सिर्फ पहला पहला सीगा मज़कूर हो। जैसे माजी से पहला ले लिया, मुजारे से पहला ले लिया, अमर से पहला ले लिया, नहीं से पहला ले लिया, इसमें फ़ाइल से, इसमें मफ़ूल से, इसमें ज़र्फ़ से। उसको उसकी गिरदान इस तरह से होती है कि ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन व ज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूबुन अल-अम्रु मिन्हु इज़रिब वन्नहयु अन्हु ला तज़रिब वज़रफ़ मिन्हु मज़रबुन मज़रबानी मज़ारिबु वल-आलतु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबानी मज़ारिबु। ठीक है। तो अब ये एक एक वर्ड लिया जा रहा है, हर लंबी गिरदान में से उसका पहला पहला वर्ड लिया जा रहा है। तो पहला पहला वर्ड अगर लिया जाए तो इसको सरफ़े सगीर कहते हैं। सगीर का मतलब है छोटा। और अगर सारे जिक्र किए जाए तो उसको कबीर कहते हैं। कबीर का मतलब है बड़ा। तो बड़ी सर्फ का मतलब है किसी एक बहस के तमाम सीगों को जिक्र करना। और छोटी सर्फ का मतलब है कि हर बहस से एक एक सीगा ले लेना। ये आगे आएंगी चीजें इंशाल्लाह तो क्लियर हो जाएंगी। अब अफ़ाले अफ़ाले मुतसर्रिफ़ा कौन कौन से हैं? तो कहते हैं अफ़ाले मुतसर्रिफ़ा फ़ैले मुतसर्रिफ़ के माना और ज़माने के एतबार से दर्ज झेल सात किस्में बनती हैं। फ़ैले माजी, फ़ैले मुज़ारे, फ़ैले जहद, मनफी वलम, फ़ैले मुस्तक़बिल मुअक्कद मनफी वलन, फ़ैले मुस्तक़बिल मुअक्कद बिल्लाम व नून ताकीद, फ़ैले अमर, फ़ैले नहीं। ये सब आगे तफसील से एक एक करके आएंगे इंशाल्लाह। फ़ायदा, कभी सीगों में फ़ाइल के एतबार से तब्दीली होती है। इस बिना पर फ़ैल की हर गिरदान में 14 सीगे जिक्र किए जाते हैं, जिसकी तफसील ये है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि कोई भी वर्ब बगैर सब्जेक्ट के उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यानी ये मुमकिन नहीं है कि काम हो और काम करने वाला ना हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, कि काम हो और काम करने वाला ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। और काम करने वाला या तो
फर्स्ट पर्सन होगा, या सेकंड पर्सन होगा, या थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन गायब, सेकंड पर्सन हाजिर, और फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम। फिर या तो वो मुज़क्कर होगा, या वो मुअन्नस होगा, या वो वाहिद होगा, या दो होंगे, या दो से ज़्यादा होंगे। अगर इनको एक दूसरे के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो इस लिहाज से कुल 18 सीगे बनते हैं। एक गिरदान में 18 सीगे होने चाहिए। वो कैसे? मिसाल के तौर पे गायब मुज़क्कर वाहिद, एक हो गया। गायब मुअन्नस वाहिद, दो हो गए। गायब मुज़क्कर तस्निया, तीन हो गए। गायब मुअन्नस तस्निया, चार हो गए। गायब मुज़क्कर जमा, पांच हो गए। गायब मुअन्नस जमा, छह हो गए। ये छह वाज़े। इसी तरह से आप हाजिर के साथ छह कर लें, इसी तरह से मुतकल्लिम के साथ छह कर लें, तो कितने बनने चाहिए? 18। 18 बनने चाहिए। लेकिन इस्तेमाल जो होते हैं वो 14 होते हैं। यानी अरब जो है वो 14 ही इस्तेमाल करते हैं। 14 इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि इसमें लाजमन कुछ ऐसे होंगे जो रिपीट होते होंगे, मोर देन वन के लिए इस्तेमाल होते होंगे। ऐसी है ना? जब भी 14 हो सकते हैं ना, कि जब कोई एक जो है वो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो। वो कौन से हैं वो आगे आ रही है तफसील, के कौन से ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको आप यहाँ देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ये नसरा, नसरा आपके सामने आ गया। जी। अब आप देखें नसरा के सामने क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? वाहिद मुजक्कर गायब। ट्रांसलेशन क्या है इसकी? मदद की उस एक मर्द ने। मदद की फ़ैल है, उस एक मर्द ने, या उसका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है? एक वाहिद मर्द मुजक्कर उस गायब। ट्रांसलेशन समझ में आ रही? कि जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसके अंदर हम हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। वाहिद होने का ख्याल कैसे किया हमने? एक। मुजक्कर होने का ख्याल कैसे किया हमने? मर्द। और गायब होने का ख्याल कैसे किया? उस जिसके बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो रही हो। तो यहाँ एक शख्स के बारे में बात हो रही है। वाज़ेह ही? अब इससे अगला वाला देखिए, नसारा, फ़ाला। मदद की उन दो मर्दों ने। दो की वजह से ये क्या कहलाएगा? तस्नीह। तस्निया। मर्दों की वजह से ये क्या कहलाएगा? मुज़क्कर। मुज़क्कर। और उनकी वजह से ये गायब कहलाएगा, क्योंकि ये मौजूद नहीं है या उनके बारे में बात हो रही है। नसरू, मदद की उन कई मर्दों ने। उन की वजह से गायब है, कई की वजह से ये जमा है, और मर्दों की वजह से ये मुज़क्कर है। ठीक है, ये तीन हो गए। उसके बाद है नसरत, मदद की उस एक औरत ने। वाहिद मुअन्नस गायब। वाहिद क्यों है? एक है। मुअन्नस क्यों है? औरत की बात हो रही है। गायब क्यों है? क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, वो खुद बात नहीं कर रही है और ना उससे बात की जा रही है। नसरता, तस्निया मुअन्नस गायब, मदद की उन दो औरतों ने। नसरना, जमा मुअन्नस गायब, मदद की उन कई औरतों ने। इसके बाद क्या है? नसरता, मदद की तुम एक मर्द ने। तो वाहिद है एक, मुजक्कर है मर्द, हाजिर है तुम, जिससे बात हो रही है वो है सेकंड पर्सन। नसर तुमा, मदद की तुम दो मर्दों ने। नसर तुम, मदद की तुम कई मर्दों ने। नसर ती, मदद की तुम एक औरत ने। नसर तुमा, रिपीट हो गया। ये और ये सेम है, नजर आ रहा है? ये वाला और ये वाला सेम है, यानी ये वर्ड रिपीट हो रहा है। इस वजह से जो वो 18 बनने चाहिए थे उनमें से एक तो यहाँ कम हो गया।
तो 17 रह गए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, नसर तुन्ना, मदद की तुम कई औरतों ने। नसर तू वाहिद, आगे क्या लिखा हुआ है? मुजक्कर। मुजक्कर और मुअन्नस दोनों। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक कम हो गया। अलग अलग होने की बजाय एक ही वर्ड जो है वो दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो तीन कवर हो गए यहाँ पे। ठीक है। मदद की एक मर्द या एक औरत ने। मैं फर्स्ट पर्सन, मैं मर्द या मैं औरत ने मदद की, फर्स्ट पर्सन हो गया, मैंने मदद की। अब मैंने मदद की मर्द भी हो सकता है, मैंने मदद की औरत भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है नसर ना, हमने मदद की। अब हमने, इसमें कह रहे हैं तस्निया भी है, जमा भी है, मुजक्कर भी है, मुअन्नस भी है। यानी एक वर्ड जो है वो चार की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तस्निया के लिए भी, चाहे वो मुजक्कर हो एक, चाहे वो मुअन्नस हो दो। जमा के लिए भी, चाहे वो मुजक्कर हो एक, चाहे वो मुअन्नस हो दो। तो चार हो गए। यानी एक वर्ड जो है वो चार की जगह को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, चार को फुलफिल कर रहा है। मदद की हम दो मर्दों ने, या हम दो औरतों ने, या हम कई मर्दों ने, या हम कई औरतों। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ क्या तर्जुमा करना है? मिसाल के तौर पे हमारे सामने वर्ड आ जाता है नसर तुमा, ये वाला। तो नसर तुमा तो ये भी है और नसर तुमा तो ये भी है। हम क्या ट्रांसलेशन करें? या आ जाता है हमारे सामने नसर तू, तो क्या ट्रांसलेशन करें? या हमारे सामने आ जाता है नसर ना, तो क्या ट्रांसलेशन करें? दो की ट्रांसलेशन करें या जमा की करें, मुजक्कर की करें या मुअन्नस की करें? तो ये जो होता है ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि यहाँ हमने क्या तर्जुमा करना है। लाज़िम बात है कि जब हमें तर्जुमे की ज़रूरत कहाँ पेश आएगी? कुरान के अंदर पेश आएगी। हमें तर्जुमे की ज़रूरत हदीस के अंदर पेश आएगी। हमें तर्जुमे की ज़रूरत किसी किताब के अंदर पेश आएगी। चाहे कुरान हो, चाहे हदीस हो, चाहे किताब हो, तो उसमें तो चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में चल रही होती है ना, आगे पीछे कुछ ना कुछ और भी तो लिखा हुआ होता है, सिर्फ एक लफ्ज़ तो नहीं लिखा हुआ होता। तो वो आगे पीछे जो वर्ड्स होते हैं, जो सिनेरियो होता है, वो बता रहा होता है कि यहाँ ये मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के लिए, यहाँ ये एक के लिए या दो के लिए है, या जमा के लिए है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो खुलासा ये हुआ कि होने तो 18 सीगे चाहिए, लेकिन अरबों का इस्तेमाल जो है वो 14 का है। इसका मतलब ये हुआ कि चार सीगे बाकी किसी के अंदर मर्ज हुए हुए हैं, जिनमें से एक सीगा यहाँ मर्ज हुआ हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है नसर तुमा। एक सीगा यहाँ मर्ज हुआ हुआ है, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और चार इसके अंदर मर्ज हुए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्या हो गया, 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं अरबी के अंदर। अब इसमें कोई मजीद सवाल किसी का है तो बताइए। कोई चीज़ ना समझ में आई हो? मेरे समझ में आ गई है, तो अब अगला काम ये आपका है कि इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, जैसे अभी मैंने पढ़ा था वैसे हो जाएगा इंशाल्लाह। हंसी आ रही है जैद साहब को। जी। तो थोड़ा सा और ज़रूर होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। इसका फ़ायदा बहुत है। याद करने का अपना फ़ायदा है। ये याद करने से ना ऐसे दिमाग में बिल्कुल नक्श हो जाते हैं कि जैसे ही कोई वर्ड हमारे सामने आता है ना, फौरन हमें क्लिक हो जाता है कि ये माजी है, और माजी का भी फुला सीगा है। क्योंकि वजन दिमाग में ऐसा पक्का होता है। अब हम हमारे तो अब इसके साथ कोई 2001 में हमने पढ़ा था इसको, और अब 2020-24 24 साल तकरीबन हो गए। अब सूरत हाल ये है कि आप अरबी तो अरबी, आप कोई उर्दू का लफ्ज़ दे दें हम उसको भी इस पे पूरा कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप हम कहते हैं ना गाजर, गाजर मूली इस्तेमाल करते हैं ना हम उर्दू में। आप किसी भी मदरसे के बच्चे को बुला के कहें कि गाजर से जो है ज़रा माजी की गिरदान सुनाओ, तो आपको कहेगा गाजर गाजर आ गाजर उ गाजर अत गाजर अता गाजर ना गाजर ता गाजर तुमा गाजर तुम गाजर ती गाजर तुमा गाजर तुम ना गाजर तू गाजर ना। अरबी का वर्ड ही नहीं है। ठीक है। ये अरबी का वर्ड भी नहीं है, फिर वो कैसे सुना रहा है? उसके जबान पे जो है ना ये वजन चढ़ा हुआ है सर। ये
फॉर्मेशन है ना वो उसकी जबान पे बिल्कुल पक्की बैठी हुई है। उसको आप कोई वर्ड दे दें वो इस पे चला देगा। और ये इतना फायदा देता है कि कुरान का कोई वर्ड आपके सामने आता है और उसकी लिटरल मीनिंग आपको नहीं भी मालूम ना, तो कम से कम ये तो आपको पता चलेगा कि ये पास्ट है। ठीक है, ये भी पता चलेगा कि पास्ट में ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये तस्निया है या जमा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। बस आपको कोई हिंट मिल जाए कि ये जो रूट लेटर्स है ना इसकी ये वाली मीनिंग होती है, अब उससे मीनिंग निकाल लेंगे। हाँ, तो कोशिश कीजिएगा। बुक आप लोगों को शेयर हो गई थी आप लोगों के साथ, भाई ने शेयर कर दी थी। कॉपी आप लोगों के साथ शेयर हो गई है। एक मिनट उस्ताद, आपको चेक करना। मैं बात नहीं समझ सका, तालीम सर्फ आप लोगों के साथ शेयर हुई है या नहीं हुई है? जी होगी उस्ताद। हो गई, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, अब हमारी क्लास पूरे एक हफ्ते के बाद है, तो कोशिश कीजिएगा ज़रा इसको इस तरह से इस तरतीब से याद करने की ना। नसरा नसरा नसरू, तीन तीन करके याद करें। नसरा नसरा नसरू, ये जब जबान पे बैठ जाए तो फिर याद करें नसरत नसरता नसरना, नसरत नसरता नसरना, नसरत नसरता नसरना, नसरत नसरता नसरना। जब ये याद हो जाए तो इन छः को एक साथ मिलाएं। नसरा नसरा नसरू, नसरत नसरता नसर। ये एक सेट हो गया। ठीक है, ये एक सेट क्यों हो गया? ये देखें, ये एक सेट इस वजह से हो गया, गायब 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 गायब। ये एक सेट हो गया। ठीक है, फिर हाजिर का एक सेट होगा। नसरता नसर तुमा नसर तुम, नसरता नसर तुमा नसर तुम, नसरता नसर तुमा नसर तुम। फिर नसरती नसर तुमा नसर तुम, नसरती नसर तुमा नसर तुम, नसरती नसर तुमा नसर तुम। ये छः का एक सेट हो गया। और फिर ये दो का एक सेट है, नसर तू नसरना, ये मुतकल्लिम के दो सीन है। ये इस तरह से इसको टुकड़ों टुकड़ों में करके आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में आपकी दूसरी क्लास होगी, तो ये लीव करता हूँ, मेरे ख्याल में दूसरे उसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया क्लास। मैंने कोई वो अबरा साहब मुझसे तो नहीं कुछ कह रहे थे, आप लोगों को अगर पता हो तो मैं उनसे बाद में बात कर लूँगा। नहीं नहीं, आपको बताइए। सासू दो गए। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप लोगों की सर्फ की क्लास होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने आज गर्दाने शुरू किए? जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अम, हम शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही जी। है? अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे कि किस किसने होमवर्क किया। होमवर्क क्या था? चलो ये तो बताए कोई।
कोई बता सकता है कि होमवर्क क्या था? अच्छा हमने जो है वो वर्ड्स जो है जो अरेबिक में थे उनको इंग्लिश है उनको ट्रांसलेट करना था और इंग्लिश वर्ड को अरेबिक में जो आपने सिखाए थे मुझे एग्जैक्टली था नाम तो प्रैक्टिस वैसे की थी एक दो में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी आपसे पूछ लो अच्छा अच्छा माशाल्लाह। प्रैक्टिस की थी, कुछ में कंफ्यूजन नहीं थी, ठीक है। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? बेशक थोड़ा सा किया है। आप लोग ना हाथ खड़ा कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। Shit. जैद जैद भाई ने किया, ठीक है। और किसी ने होमवर्क अटेम्प्ट किया? अच्छा, इस दफा शैतान ने रोका। अच्छा, नफ्स ने नहीं रोका, शैतान बड़ा ताकतवर हो गया। अच्छा, और अब चैट में आज में कभी कभी मुझसे मैसेज मिस हो जाएगा, तो इत्तेफाक से मैं देखे तो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा इंशाल्लाह। बाकी लोग कौन रह गए? रोहेल, सबीह, अलियान, सब तीन रह गए। आप लोग हैं क्लास में कि नहीं? अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग देखी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो आई थिंक हम फिर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पुराना लेसन। बिल्कुल, थोड़ा सा फिर इंशाल्लाह नया लेसन शुरू करेंगे। अम, आप सबके पास बुक होनी चाहिए इंशाल्लाह। बुक की पीडीएफ उधर जो शेयर्ड फोल्डर है उसके अंदर है। यहाँ ऑनलाइन भी आप ढूंढ सकते हैं। अरबिक ट्यूटर, अरबी का मुअल्लिम की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसका लेसन नंबर 2 था जो हमने किया था लास्ट टाइम, जिसमें let me switch to English. We covered lesson number 2, in which there are details about alif lam and the various types of ma'rifa, um, and details related to hamzatul wasl and uses about tanween, etc. So the intro to the ta'rif or proper nouns was in the first lesson, and lesson 2 was in more details about that. It also covered the nakira in some detail. So the first exercise I was given last time was mostly to get you guys started about developing your vocabulary. मेरे एक उस्ताद है मुफ्ती सुलेमान साहब, इधर यूएस में या ओहायो में। वो उनसे मैंने अरबिक काफ़ी पढ़ी। वो हमेशा कहते रहते थे कि वोकेबलरी बिल्ड करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप पढ़ते रहें और सीखते रहें, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। न्यू वर्ड्स अस्मा हो, नाउन्स हो या वर्ब्स हो, there's only one way, which is to just keep remembering, memorizing them one by one, and using them, new words that come across. So इसलिए that's why I started at least with one first homework, which was very simple, which was all pretty much purpose was to develop some level of vocabulary, and there was some difference between uses of proper and common nouns, but the main purpose was the vocabulary. Anyway, so today inshallah we will start. I think that's pretty much most about I wanted to say about the previous lesson. Today let's start compounds
This is lesson number 3. Let me give a brief introduction about what are compounds, and then I'll ask somebody, or you guys can volunteer to read the book. So compounds in Arabic, or in Urdu or Arabic, you call them murakkab, murakkabat, or murakkab, something that has been merged and collected to make a whole, some bigger thing. So collection of words, more than one words, would be called murakkab. Okay. If there are 2 or more words, it's called murakkab. Words are, lafz, kalima. Kalima is a word. And how many types of kalimas are there in Arabic? Who remembers? 3. 3? Which ones? Ism, fi'l, or harf. MashaAllah, alhamdulillah. Ism, fi'l, harf. Yes, so when 2 ism, or an ism and a fi'l, or 2 fi'l, or a harf and an ism, or a harf and a fi'l, anything, any combination of 2 or more come together, then that's called a murakkab. All right, it's called a murakkab. There are different types of murakkabat. Sometimes joining 2 or more kalimat completes the sentence, completes the meaning. Then it's called a sentence. And sometimes it does not. So these are 2 types of murakkabat. One is called murakkab naqis. Naqis means incomplete. So incomplete compound. And murakkab tam. The word tam means complete. Tamam has the same roots. Tam is complete. Complete means that it is complete in its meaning. It conveys the full meaning, full information, a full command, whatever. It completes the meaning. So complete information is there. Okay. I'll give you, let me think. One option is that I give you, I think it's a good idea. So I'll give you an example, and this is going to be interesting, inshallah. Pay attention, inshallah. One, ar-rajulu salih. And other, rajulun salihun. Okay. Now, can anyone translate this first one? Let's do this. Can anyone translate the first word here? This is the last exercise, last lesson. What's the meaning of this? The word? The man. The man, right? Is it a man or the man? The man. Very good. Because of? How do you know it's the man? Alif lam. Yes, because of alif lam. Yeah, it's a proper noun, so you use the particle. Okay. And the word salih means? Pious. Pious. Okay. Someone who's doing fine, or he's correct, or he's good. Let's call good. Let's say good. So salih and salih is the same, both of these. Pious or good. What's the translation of rajulun? Amen. Okay. Now, both of these are murakkab, because both of, meaning this A whole phrase or compound and this whole B. This box, A box and B box, both of them are compounds, because each of these 2
is a combination of at least two kalimat. In both the cases, there are two asma, two ism, two nouns. This is a noun, proper noun here. It's a common noun here. This is also a noun. This is also a noun. So the two A and B are examples of murakkabat. Now, the difference in the two is this A is murakkab tam and this B is murakkab naqis. The A conveys the complete meaning, which is the man is pious. The meaning of B is a man pious. In Arabic, we write it like this, but in English, when we actually translate, this should be a pious man. Because in English, we put the property first and then the the zat or the person or the thing, entity after. So this is a pious man. It's not a complete sentence. It's just saying a pious man. What did that pious man do? Who is he, etc. is unclear. Okay, so this one is not a sentence, and this one is a sentence. Okay, now in Arabic there is no is. In English you write explicitly is. In Arabic there's no is written in between these two. There's no alternate Arabic word for is. Something is A is B or X is Y. There's no is written in Arabic. Okay, you need to figure out based on the sentence structure. This is the real thing that you're learning today. Why did I say that this one is a compound? Because the two asma that came together here, Rajulun and Salihun, fulfill the conditions of Murakkab Tawsifi. Now let's go here. Murakkab Naqis has many types. One of the types is Murakkab Tawsifi. Okay. Adjectival phrase. So murakkab is a phrase and adjectival because of tawsifi, meaning a phrase which also conveys an adjective with it. Example is this: a pious man, rajulun salihun. Okay. Now, so far what you've seen is that when two kalimat get together, it becomes a murakkab. That murakkab could be tam, meaning a full sentence conveying a full meaning. An example is ar-rajulu salihun, the man is pious. Option 2 is that the combination of two kalimat makes a murakkab, a compound, which does not convey a full meaning, but it conveys something. It conveys a compound meaning. So there are different types of those that are called murakkab naqis, and there are different types of murakkab naqis. One of them is adjectival phrase or murakkab tawsifi. Murakkab tawsifi is that incomplete compound which has a property, a sifa, and a mawsuf, the entity to which that property belongs. So there are two components of this. Now we're zooming into murakkab tawsifi. One is mawsuf, the other is sifa. These two are words in Urdu as well. Sifat हम कहते हैं ना किसी की सिफ्त ऐसी है. Awsaf, the qualities or properties. So that's a plural of sifa, sifatun, and mawsufun. Mawsuf is the entity, the person, or the thing, and sifa is its quality. I think it's called adjective. So in English, all right. So in this example, a pious man. What is mawsuf? What is sifa? Anyone? Mawsuf is man and Sifat is pious. Very good. So in Arabic, what's the man called? What's a man called? Rajulun. Rajulun, exactly. So Rajulun
is mawsoof and the sifa is salihun. Here, example. Right, this is example. Mawsoof is this, sifa is this. This is it. Now let me zoom into. Actually, let's read first, because I think now is a second level of detail. We can come back to the this drawing again, but let's start reading. Who can read from the beginning of the lesson? Sheikh, if you need me to, Sorry, what? I can, inshallah. Okay, please go on. So do you have the book open? I do have the book open and can't find the page. Okay. It's It's lesson 45. 45, 35. 45. Okay. Of the PDF or The PDF. Jazakallah. Lesson 3, compounds. Hmm. Number 1. A combination of two or more words is called murakkab. The relationship between them is called tarkeeb. Compounds are of two types: naqis, incomplete, and tam, complete. A. An incomplete compound, murakkab-e-naqis, is a combination of words from which no information, order, or desire is understood. It is an incomplete sentence. Example: rajulun hasanun, a good man, and kitabu rajulin, a man's book. B. A complete compound, murakkab-e-tam, is a combination of words from which some information, command, or wish is understood. Example: ar-rajulu hasanun, the man is good. This statement provides us with information that the man is good. Khudil kitaba, take the book. The order of taking the book is understood from the sentence. Rabbir zuqni, O my sustainer, grant me sustenance. A request is understood from this statement. Do I continue on from the next page? Yeah, go on. A complete sentence is also called jumla or kalam. Number 3. Incomplete compounds are of several kinds. Example: murakkab-e-tawsifi, murakkab-e-izafi, murakkab-e-adadi, etc. Here we will discuss murakkab-e-tawsifi. The other types will be discussed later on, as will complete sentences. All right, The just a adjective. second. Okay, so this was an introduction to compounds, the two types of compounds, different examples within them. Let's go on. Now we are now focusing on murakkab tawsifi. So you can start reading and then I'll explain as well, inshallah. Murakkab-e-tawsifi. A murakkab-e-tawsifi is a compound in which the second word describes the first word. Example: rajulun salihun, a pious man. The word salihun describes the word rajulun with the quality of piety. The first part of a murakkab-e-tawsifi is ism al-zat, while the second part is ism al-sifa. In the above example, the word rajulun is ism al-zat, while the word salihun is ism al-sifa. The first part of murakkab-e-tawsifi is called mawsoof, while the second part is called sifat. In the above example, the word rajulun is a mawsoof, while the word salihun is a sifat. If the mawsoof is indefinite, meaning nakara, the sifat will also be nakara. Otherwise, it will be marfa. In the compound rajulun salihun, both parts are nakara, indefinite. In the phrase ar-rajul salihu, is that how the sentence changes? Yeah. Both parts are marfa, definite. 8. The same declension, i'rab, that applies to mawsoof will apply to the sifat. Number 9.
A murakkab tawsifi and all other incomplete compounds form part of a sentence. Okay, now next is just vocabulary, and then that's it. That's the end of the lesson. Okay, so there should be some things that were not clear when you just read it, or did you guys completely understood every single point? I'll explain, inshallah. Murakkab tawsifi. First thing is this. So the point number 4 was pretty straightforward, right? Just an example. I think we covered that too. Point number 5 just says that the first part, which is called mawsuf, is ismu zat, and second part, which is called sifa, is ismu sifa. Now here they're referring to the first lesson. In the first lesson, lesson number 1, we had seen types of nakira. This word is nakiratun. Okay, kaf is a kasra or a zir. Similarly, ma'arifa, ra has a kasra or zir. So types of nakira we saw in lesson 1. One was ismu zat, other was ismu sifa. Ismu zat indicates the entity of something, essence or entity. The rajulun is a man. Ismu sifa indicates a quality or property of something. The word itself conveys a meaning of an entity or conveys a meaning of a quality. Okay, that's the distinction here. This was at the word level. In this lesson, lesson 3, we are talking now at the sentence level, meaning when combining different words together to form a compound. So at the level of a single word, the word rajulun is a single word which gives you the concept of a man, which is a human being, entity, zat. And ismu sifa, like for example, salihun or hasanun or qabihun or jamilun, these words give you a sense of a property or quality of something. So that's the distinction that we saw in the types of nakira. So this is what they're saying in point number 5, that the first word, which is mawsuf, is usually ismu zat, is the type of nakira which is ismu zat usually. Okay, and the second word, which is called sifa, is usually the type of nakira which is called ismu sifa. So there is sifa and ismu sifa are different things. Because sifa is specific to murakkab tawsifi. Only when you have murakkab tawsifi, a compound like that, then you can say there is a sifa and there is a mawsuf. Ismu sifa is at the level of a single word. If it comes independently, when you're analyzing a single word independently, you can say it's ismu sifa or ismu zat. You cannot say it's a sifa unless there is a mawsuf as well with that. Is that clear? Hopefully. So could you repeat it again? Okay, I said that ismu sifa and sifa are two different things. Ismu sifa is a type of a nakira. It's at the level of a single word. When you given a single word, if you ignore where it is coming in the sentence, everything else around it, just concentrate on one single word. That one single word could be ismu. If it's nakira, it could be ismu sifa. If that single word is nakira, it could also be ismu zat. One of these two, because these are the two types of nakira, meaning improper nouns, common nouns. So a single word, for example, jamilun, a single word itself is either ismu sifa. If it's nakira, if it's either ismu sifa or ismu zat. That's it. This was the first lesson in the first lesson. Now what we're saying here is that when you have murakkab tawsifi, usually the sifa, which is the second part of murakkab tawsifi, is usually ismu sifa. The first part of murakkab tawsifi, which is called mawsuf, is usually ismu zat. Okay, this is all they're saying. Don't worry about this if it's still the terminology is confusing you. It's very simple, inshallah. If it's still not clear, it's okay. You can ignore for now. Let's focus on the main thing, which is point number 7, 8, and 9. So
what they're saying is that how do you know something is murakkab tawsifi and not some other kind of murakkab? There are four things. There are four things. I don't think they keep the whole four things here. Let me write them. 2, 3, 4. If you memorize these right now, inshallah, the whole of your life, it's going to be very easy. There are four things in a ism, four properties of any ism, whether it's nakira, marifa, whatever ism is. Four properties of any ism. First is the distinction between the type. So type, you could just memorize, is either proper versus improper. There are two options in this type. It's proper noun or improper. Any ism could be proper or improper. It can't be both. It has to be one of these two. It can't be any third thing. All right, that's first. Second is so this proper is ma'rifa, improper is nakira. The point number 7 is exactly telling you if two words come together to ism, if both of them are ma'rifa, then it's possible that, or if both of them are nakira, in these two cases, it's possible that these can be mawsuf sifa combination. All right, meaning if mawsuf is improper, let's say nakira, sifa has to be nakira. If mawsuf, it cannot be the other way. They cannot be different in this property called type. If one of them is ma'rifa, they gave the example ar-rajulu. The mawsuf over here is ar-rajulu. Hence, the sifa also, the quality which is as-salihu, should also be ma'rifa. That's why both of them have alif lam, meaning both of them are ma'rifa. So this is one very important thing to remember, that mawsuf sifa, whenever they come, both of them share the same type. Either both of them are ma'rifa or both of them are nakira. Okay, clear? All right. So they gave examples of. Sorry, were you saying something? No, it's clear. Okay, alhamdulillah. Second thing they're saying is i'rab. Let me write it in the end. So i'rab, all they're saying over here is that the same declension which is called i'rab, this is i'rab. Okay. The same i'rab applied to mawsuf, and the same i'rab will apply to sifa. In English, they call it declension, which is a very strange kind of a very complex word, but let's just keep it. What they're saying is the i'rab of mawsuf must exactly be the same as the i'rab of sifa. That's it. The i'rab of sifa must exactly be the same as the i'rab of mawsuf. Okay, they don't explain what do you mean here by i'rab. All they say in the footnote is something that you're going to see in lesson 10. Although I don't agree with the idea. I mean, it's better that they introduce i'rab in the first lesson or second lesson. I think that's a very important concept in the whole language. But I'll just tell you that there are 3 types. So as a very simple example, you can see a dhamma on the word ar-rajulu, and you can see, which is pesh in the end, and also you see dhamma on the word salih, right? This is one like depiction of i'rab being common, that both of them end with a dhamma. Okay, just for now, you can see an example on the previous page. They mention in point number 2a, a man's book, kitabu rajulin. Do you guys see that? Kitabu rajulin. Yes or no? Yes. Okay, the translation is a man's book. Here the word kitab, although both of them, kitab and rajulun, both of them are nakira, meaning they match in the type, but they don't match in the i'rab. Kitabu has a dhamma in the end, ba has a dhamma in the end. Rajulun has a pesh.
Rajulun has a kasra, zair in the end. So they don't match in the Arab over here. So, and so also the translation also tells you it's not a sifa mawsuf sifa. It's not book man. It's not a mawsuf and sifa. It's actually indicating possession. One is the possessor of the other thing, and both of these things, kitab and rajul, are ismuzat. Both are entities. A book is a book, physical thing. Rajulun, man, is a man. So it's not the kitabu rajulun doesn't follow the normal it's not how murakkab tawsif is supposed to be based on what you have seen so far. Murakkab tawsif is supposed to have first word must be mawsuf, second word must be sifa. They must be same, matching in their type. They must also be matching in their i'rab. Okay, and the translation also tells us the same thing, that a man's book actually indicates possession of something. It does not indicate the quality of something. All right, so this was just to tell you that they already showed you an example of i'rab being different. So all they've covered so far in the lesson is that the mawsuf and sifa must match in their type. The mawsuf and sifa must match in their i'rab. I wish they had finished the whole topic, but let me tell you, inshallah, I think it's going to come in the very next lesson, or yeah, actually it is. Lesson number 4 and 5 is exactly this. Lesson number 4 is this, gender. Lesson number 5 is this, the number. Number means singular, plural, dual. You can flip the order. There are 3 options here: singular, dual, plural in the number. In gender, there are 2 options: masculine and feminine. So inshallah, after we do lesson number 4 and 5, now we just finished lesson 3. After we do lesson 4 and 5, then you can know, you will know completely, inshallah, the whole story will be clear. Gender should also match in the mawsuf sifa, meaning if the first word is masculine, the second word must also be masculine. If the first word is which mawsuf is feminine, the sifa must also be feminine. Here you saw rajulun salihun. The word itself, rajulun is very straight. It's very easy. For rajulun, it's very easy that it's masculine. But the word salih, although it's a sifa, it indicates a quality, meaning good or pious. But there is a feminine version of salih. Anyone knows the feminine version of salih? The word salih? Salihatun. Salihatun, exactly. Right? So words which are sifas, ismu sifa, could also be masculine, feminine. Any ism could be masculine or feminine, almost, right? Okay. There are some isms which are both, that also exist. Like masdar, which is called in English, it's called the gerund, gerund in English grammar, or verbal noun is another similar word, similar concept. They are usually genderless, but usually a word could be masculine or feminine. So mawsuf sifa must match in type, meaning marifa and nakira. Mawsuf sifa must match in gender. If one is masculine, the other must be masculine. One is feminine, the other must be feminine. And third, mawsuf sifa must also match in number. If first is singular, second must also be singular. If one is dual, the other must also be dual, and plural and plural. Okay, this will come inshallah in lesson number 5. And fourthly, they must match in i'rab. This is one of the biggest things, or one of the key things to learn. This is all you need to know about mawsuf sifa, really. And mawsuf sifa, is everywhere. Okay. Ar-Rahman Ar-Rahim. Like after Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Word Ar-Rahman Ar-Rahim are different sifat of Rabbil Alameen. Rabbil Alameen, this whole phrase is mawsuf here. Actually, the mawsuf over here is Allah, the word Allah. There are different tarkeeb of this Surah Fatiha, but Alhamdulillah, the word Allah is mawsuf. Now, Rabbil Alameen is first sifa.
which is actually a phrase here. So there's detail how can a phrase be a sifa. Ar-Rahman is another sifa. Ar-Rahim is another sifa. Maliki Yawmiddin is another sifa. Okay, it's everywhere in the Quran, mawsuf sifa. Okay, so inshallah, now vocabulary list. You guys need to read all of this and memorize all of this, inshallah. This is, you need to build your vocabulary so that you can create sentences, understand sentences, translate sentences, inshallah. They give the vocabulary list. This whole list, this table, word and meaning, includes both types of things: the ismu zat and asma zat and the ismu sifa. Meaning, some words are indicating entity, some words are indicating a quality of something. Like, for example, hulwun is sweet. Hulwun, something sweet. So it's a property of something. This is ismu sifa. But qalamun, pen, is a pen. It's a thing. So it's ismu zat. So it includes many things, like they say in the next page. Above list contains many ismu zat and sifa. You can combine these. The ismu zat and ismu sifa can be combined together if you ensure that they are matching in those four properties here. For you could just make sure they match in the type and the i'rab, because gender, number we haven't covered yet. So if they're matching in both are marifa and both are same i'rab, then it's a mawsuf sifa. Both are nakira and both have same i'rab, then this is mawsuf sifa. So you can make combinations here. That's the exercise now. Make combinations, join an ismu zat and an ismu sifa to make a mawsuf sifa pair, a murakkab tawsifi. All right, next, last, they just give exercises again. They're Arabic to English, and then English to Arabic. And inshallah, this is again so that it builds your vocabulary, and you also learn how to make mawsuf sifa, how not to make a mistake in this. Allah. So this one you definitely need to do. Now, if you get time, also do the previous homework. But this one, you definitely should do. You should do at least 10 each in the 2 lessons, 2 exercises. So exercises or homework is exercise 2. This is your homework. In part A, at least any 10 of the 21 that's there. And similarly, at least any 10 here. Okay. What you can do is please make a, give some time to this. You have the whole week. At least allot 30 minutes of your whole week to, reviewing this. And then within 30 minutes, you could do everything basically. Just read all this. And then you have the whole vocabulary list table in the book. Just take it and, start filling. Take every word in the exercise and then just start writing in English from Arabic to English. And similarly, do the same in English to Arabic. Inshallah, even if you use Google here Translate or whatever you use while doing your homework, it's still fine, because you're at least you're learning still something. Okay, so please, inshallah, may Allah accept time. If there are any questions, please ask, otherwise we can inshallah stop. Ustad, could you just confirm ये जो भी आपने बात की है, 4 things जो हम decide करते हैं, could you just repeat that concept के what will it be the same for? Okay, what do we look for? Okay, you said सब कुछ same होगा उसके लिए. Can you just explain that? Whenever there's, okay, first of all, these are 4 properties of any ism. An ism is exactly known and unique when all 4 are known. Okay. These are properties of ism. What we are saying is about murakkab tawsifi is the mawsuf and sifa must match in all 4 properties of the ism. The ism, which is mawsuf, let's say mawsuf is an ism and sifa is also an ism. That's normally the case. Mawsuf is an ism and sifa is an ism. Both of these, mawsuf and sifa, the 2 nouns, must match in these 4 properties of each other. I can do an example just to make sure. We did this, let's do a new one.
imra'atun qabihatun. Okay, this. Now, this is actually Mawsuf Sifa, and I'll tell you the translation is qabiha. Oh, it's a good English one. It's not written. Something which is rebellious, repulsive. This a woman. Okay, or wicked. That's a wicked woman. This is a Mawsuf Sifa. Now, first thing we see is the type of these matching. So first you can see this is nakira very clearly because there is tanween on the end. This is lesson number 2. Okay, if you do exercise lesson number 2, you can know this is nakira because there's tanween in the end. Tanween is what is to dhamma in the end. There's no alif lam. This is a nakira. It's not a ma'rifa. Similarly, imra'atun has the same. It's a tanween in the end. So this is also nakira. So first check complete. Second, gender. This has a round ta in the end. Round ta indicates gender. Inshallah, we will cover it next lesson as well. But since you asked, so there's a round ta, so this is feminine. And similarly, imra is a woman, so she's obviously a feminine. So this check complete. Number. This round ta is single round ta, indicates a singular person or singular entity. So this is singular. And imratun is of course a woman, so that's also singular. When we do plural and dual, then you will inshallah notice what's the difference. So this also matches. These two we did not do so far, that's why maybe you'll just say, okay, this is matching, but I don't know why. All right, but let's focus on things that you know. Arab, you can see that both of them have a round ta in the end, and they end with the tanween that has a dhamma. Both of them have the same ending. This is one way to check Arab, but it's not universal. It's not always going to be true. They don't tell you what are Arab, so you can just know, right at this moment, just take as is that the Arab are matching because they end with the same haraka. This is one very crude way of saying the Arab match, that the last words haraka on the last word, last letter is the same. It means that the Arab are the same. Got it. Jazakallah. Okay. So because all 4 match, hence it is Mawsuf Sifa or Murakkab Sifa. All right. Anyone else? Any questions, suggestions? Okay. Alhamdulillah. So I have low battery. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan everyone for joining. Looks like the meeting was not recorded. I don't know. Did I disconnect? I don't know. Anyway, inshallah, let's stop. Inshallah, we'll continue next time. Assalamu alaikum.